Hello friends, so this is digital payment methods lecture 2. So in this lecture we will discuss NEFT RTGS, ECS, CTS, AEPS. So you can see in NEFT settlement begins at 0030. ठीक है रात के 12:30 बजे एंड लास्ट बैच इन एट शार्प 00 मतलब 12 बजे. And then CTS, parties in CTS, inward check, outward check. What is positive pay system? तो जो भी 50,000 से ऊपर का अमाउंट का चेक होता है तो उसके लिए जो है वो जो भी चेक इशू करते हैं तो ऐप होता है, ठीक है, जिस भी बैंक का चेक वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो फीड करते हैं जो क्लियरिंग के टाइम में वेरिफिकेशन के लिए काम आता है. तो पॉजिटिव पे सिस्टम है हमारा. देन ECS डेबिट, ECS क्रेडिट, देन AEPS maximum amount of money you can withdraw from AEPS 10,000 rupees. That for AEPS. What is RRN, what is UTR, and then this is steps in dispute resolution in AEPS. Complaint raised by customer, then chargeback, representment, pre-arbitration, arbitration. And then we will discuss everything one by one. What is chargeback, what is pre-arbitration, what is representment, what is pre-arbitration, what is arbitration. So this video is available in our app, so go and download our app for complete video. Thanks.